आज की क्लास में मैं कवर करूंगा डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट सेकंड, जिसमें फेरिंग्स, ईसोफेगस एंड स्टमक की एनाटॉमी और उसके फंक्शंस एक्सप्लेन करूंगा। फेरिंग्स, जिसे हिंदी में ग्रसनी कहते हैं। द फेरिंग्स इज डिवाइडेड फॉर डिस्क्रिप्टिव पर्पस into three parts: the nasopharynx, oropharynx, and laryngopharynx. The nasopharynx is important in respiration. The oropharynx and laryngopharynx are passages common to both the respiratory and the digestive systems. Food passes from the oral cavity into the pharynx, then to the esophagus below, with which it is continuous. जो ग्रसनी या फेरिंग्स है वो हमारे ओरल कैविटी से कंटिन्यू लगा हुआ एक रचना है जो आगे फनल सेफ होता है और पीछे सकरा होता है। अध्ययन की सुविधा से इसके तीन भाग होते हैं। पहला नेजोफेरिंग्स, दूसरा ओरोफेरिंग्स और तीसरा लैरिंगोफेरिंग्स। लैरिंगोफेरिंग्स का संबंध नेजल कैविटी जो श्वास में मदद करता है। ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स एक कॉमन पैसेज प्रदान करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम और श्वसन के लिए, और भोजन यहाँ से पास होता हुआ ईसोफेगस में पहुँचता है। ब्लड सप्लाई। द ब्लड सप्लाई टू द pharynx इज बाय सेवरल ब्रांचेस ऑफ द फेशियल आर्टरीज. Venous drainage is into the facial veins and the internal jugular veins. जो रक्त की आपूर्ति की जाती है वो बहुत सारी ब्रांचेस के द्वारा की जाती है, जो कि फेशियल आर्टरीज की ब्रांच होती है, और कलेक्शन या वेनस ड्रेनेज फेशियल वेंस और इंटरनल जुगुलर वेंस के द्वारा होता है। नर्व सप्लाई। दिस इज फ्रॉम द pharyngeal plexus and consists of parasympathetic and sympathetic nerves. Parasympathetic supply is mainly by the glossopharyngeal and vagus nerves and sympathetic from the cervical ganglia. जो तंत्रिका आपूर्ति की जाती है वो फेरेंजियल प्लेक्सस के द्वारा की जाती है, जिसमें पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्व्स की सप्लाई होती है। ये फेरिंग्स का डायग्राम देखिए। इसमें आपको ओरल कैविटी से अंदर की तरफ ध्यान देना है, जहाँ नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स लगा हुआ है। ईसोफेगस, या जैसे हिंदी में ग्रास नली कहते हैं। द ईसोफेगस इज अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड अबाउट 2 सेंटीमीटर in diameter and lies in the median plane in the thorax in front of the vertebral column behind the trachea and the heart. It is continuous with the pharynx above and just below the diaphragm. It joins the stomach. It passes between muscle fibers of the diaphragm behind the central tendon at the level of the 10th thoracic vertebra. Immediately, the esophagus has passed through the diaphragm. It curves upwards before opening into the stomach. This sharp angle is believed to be one of the factors that prevents the regurgitation or backflow of gastric contents into the esophagus. The upper and lower ends of the esophagus are closed by sphincters. ईसोफेगस की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है और इसका व्यास 2 सेंटीमीटर होता है, जो कि थॉरेक्स के मीडियन प्लेन से होती हुई नीचे की तरफ जाती है, हार्ट के पीछे से प्रवेश करती है और डायाफ्राम को भेद कर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर हुक बनाती हुई स्टमक से जुड़ती है। इसमें ऊपर और नीचे स्फिंक्टर के द्वारा 2 वाल्व लगे होते हैं जो कंटेंट्स को वन वे में जाने देते हैं, बैक फ्लो को उसको प्रिवेंट करते हैं। ब्लड सप्लाई, रक्त आपूर्ति, आर्टीरियल। द thoracic region is supplied mainly by the paired esophageal arteries, branches from the thoracic aorta. The abdominal region is supplied by branches from the inferior
phrenic arteries and the left gastric branch of the celiac artery. Venous drainage. From the thoracic region, venous drainage is into the azygos and hemiazygos veins. The abdominal part drains into the left gastric vein. There is a venous plexus at the distal end that links the upward and downward venous drainage. रक्त की आपूर्ति जो कि छाती के भाग में की जाती है वो पेयर्ड ब्रांचेस के द्वारा होती है, जिसको हम ईसोफेजियल आर्टरीज कहते हैं, जो कि एओर्टा से निकलती हैं। जबकि एब्डोमिनल रीजन में जो ईसोफेगस होता है उसे इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरीज की ब्रांच और लेफ्ट गैस्ट्रिक ब्रांच के द्वारा सप्लाई किया जाता है, जो कि सीलियक आर्टरी की ब्रांच होती है। वेनस ड्रेनेज या ब्लड कलेक्शन थोरेसिक रीजन में एजाइगस और हेमिजाइगस वेन्स के द्वारा किया जाता है। एब्डोमिनल पार्ट में गैस्ट्रिक वेन के द्वारा होता है। इसमें ईसोफेगस की पोजीशनिंग देखिए, आप दिखाई दे रहे हैं। सिक्स्थ वर्टिब्रल सर्वाइकल वर्टिब्रा के लेवल से स्टार्ट होती है, थॉरेक्स में एंटर करते हुए 10th लेवल के थोरेसिक वर्टिब्रा पर डायाफ्राम को भेद कर 11th लेवल के वर्टिब्रा पर हुक बनाती हुई स्टमक में जुड़ जाती है। Functions of the mouth, pharynx and esophagus. Formation of bolus. When food is taken into the mouth, it is chewed, masticated by the teeth and moved around the mouth by the tongue and muscles of the cheeks. It is mixed with saliva and formed into a soft mass or bolus ready for swallowing. The length of time that food remains in the mouth largely depends on the consistency of the food. Some foods need to be chewed longer than others before the individual feels that the bolus is ready for swallowing. सबसे पहले हम भोजन मुंह में ले जाते हैं, दांतों की सहायता से काटते हैं और चबाते हैं। चीक मसल्स और टंग की मदद से उसमें सलाइवा को मिक्स किया जाता है और कुछ ही देर में बोलस के रूप में वो रेडी हो जाता है, जिससे हम निगलने के लिए तैयार कर लेते हैं। स्वेलोइंग या डेग्लूटेशन, दिस अकर्स इन 3 stages after chewing is complete and the bolus has been formed. It is initiated voluntary but completed by a reflex involuntary action. First, oral stage, second, pharyngeal stage, third, esophageal stage. With the mouth closed, the voluntary muscles of the tongue and cheeks push the bolus backwards into the pharynx. Pharyngeal stage, the muscles of the pharynx are stimulated by a reflex action initiated in the balls of the oropharynx and coordinated by the swallowing center in the medulla. Involuntary contraction of these muscles propels the bolus down into the esophagus. All other routes that the bolus could take are closed. The soft palate rises up and closes off the nasopharynx. The tongue and the pharyngeal folds block the way back into the mouth, and the larynx is lifted up and forward so that its opening is occluded by the overhanging epiglottis, preventing entry into the airway trachea. Esophageal stage. The presence of the bolus in the pharynx stimulates a wave of peristalsis that propels the bolus through the esophagus to the stomach. The walls of the esophagus are lubricated by mucus, which assists the passage of the bolus during the peristaltic contraction of the muscular wall. भोजन को निगलने में 3 स्टेज होती हैं। पहला ओरल स्टेज, दूसरा फेरेंजियल स्टेज और तीसरा एसोफेजियल स्टेज। ओरल स्टेज में हम मुंह को बंद करते हैं। हमारी वॉलंटरी मसल्स जो कि टंग और चीक के द्वारा इसको पुश करते हैं, पीछे की तरफ फेरिंग्स में ढकेलते हैं। फेरेंजियल स्टेज में फेरिंग्स से भोजन को अंदर की तरफ निगला जाता है। सॉफ्ट पैलेट ऊपर उठकर नेजोफेरिंक्स एरिया को बंद करता है। एपिग्लॉटिस की सहायता से ग्लॉटिस को बंद किया जाता है ताकि भोजन इसोफेगस में जाए, ट्रैकिया में बिल्कुल भी एंट्री ना हो।
और ईसोफेजियल स्टेज में जैसे ही भोजन ईसोफेगस में जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टार्ट होती है, साथ ही म्यूकस रिलीज होता है और कुछ ही सेकंड बाद पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा ये फूड मटेरियल जिससे हमने बोलस का नाम दिया है स्टमक में पहुंच जाता है। स्टमक या आमाशय। The stomach is a J-shaped dilated portion of the alimentary tract situated in the epigastric, umbilical, and left hypochondriac regions of the abdominal cavity. The stomach is continuous with the esophagus at the cardiac sphincter and with duodenum at the pyloric sphincter. It has two curvatures. The laser curvature is short, lies on the posterior surface of the stomach, and is the downward continuation of the posterior wall of the esophagus. Just before the pyloric sphincter, it curves upwards to complete the gesture. Where the esophagus joins the stomach, the anterior region angles acutely upwards, curves downwards, forming the greater curvature, and then slightly upwards towards the pyloric sphincter. The stomach is divided into four regions: the cardiac region, fundus, body, and the pylorus. At the distal end of the pylorus is the pyloric sphincter, guarding the opening between the stomach and the duodenum. When the stomach is inactive, the pyloric sphincter is relaxed and open, and when the stomach contains food, the sphincter is closed. हमारा आमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है जो एब्डोमिनल कैविटी में एपिगैस्ट्रिक, अम्बलाइकल और हाइपोकॉर्डिक रीजन्स में रहता है। जब ये खाली रहता है इसका आकार जे शेप्ड होता है। स्टमक में जब ईसोफेगस कनेक्ट होती है वहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है, उसे हम कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। स्टमक का शेप जे शेप है और इसमें दो कर्वेचर होते हैं, एक लेज़र और एक ग्रेटर। इसके चार भाग होते हैं, पहला कार्डियक रीजन, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। पाइलोरस पर भी एक स्फिंक्टर होता है जिससे पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। जब स्टमक एक्टिव होता है उसमें प्रोसेस चर्निंग प्रोसेस चल रही है, तब दोनों स्फिंक्टर क्लोज होते हैं ताकि उनके कंटेंट्स ना तो ईसोफेगस में जा सकें और ना ही पाइलोरस में जा सकें। जब ये अपना काम कर लेते हैं पाइलोरस खुलता है और लिक्विड मटेरियल को ड्यूोडेनम में छोड़ दिया जाता है। ब्लड सप्लाई। Arterial supply to the stomach is by the left gastric artery, a branch of the celiac artery, the right gastric artery, and the gastroepiploic arteries. Venous drainage is through veins of the corresponding names into the portal vein. Gastric juice and functions of the stomach. Stomach size varies with the volume of food it contains, which may be 1.5 liters or more in an adult. स्टमक की पिक को देखें, इसको जे शेप आपको दिखाई दे रहा है। ऊपर ईसोफेगस की एंट्री हो रही है और नीचे से पाइलोरिक स्फिंक्टर के बाद ड्यूोडेनम स्टार्ट होता है। ध्यान से देखिएगा इस पिक को, इसमें सारे नाम लिखे हुए हैं, आप पढ़ते जाइए और इसको समझते जाइए। जब स्टमक खाली होता है और इंटरनल वॉल देखते हैं तो उसमें हमें झुर्रियाँ दिखाई देती हैं, उनको रूगी कहते हैं। जैसे ही ये फिल होता है ये रूगी डिसअपियर हो जाती हैं क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होती हैं, फैलने का गुण होता है। When a meal has been eaten, the food accumulates in the stomach in layers. The last part of the meal remaining in the fundus for some time. Mixing with the gastric juice takes place gradually and it may be some time before the food is sufficiently acidified to stop the action of saliva amylase. The gastric muscle generates a churning action that breaks down the bolus and mixes it with gastric juice, and peristaltic waves that propel the stomach contents towards the pylorus. When the stomach is active, the pyloric sphincter closes. Strong peristaltic contractions of the pylorus forces chyme gastric contents after they are sufficiently liquefied through the pyloric sphincter into the duodenum in small spurts.
Parasympathetic stimulation increases the motility of the stomach and secretion of gastric juice. Sympathetic stimulation has the opposite effect. Gastric juice. About 2 liters of gastric juice are secreted daily by specialized secretory glands in the mucosa. It consists of water, mineral salts, mucus secreted by mucous neck cells in the glands and surface mucus cells on the stomach surface, hydrochloric acid, intrinsic factor, inactive enzyme precursors, pepsinogens secreted by cheap cells in the glands. Functions of gastric juice. Water further liquefies the food swallowed. Hydrochloric acid acidifies the food and stops the action of salivary amylase. Kills ingested microbes. Provides the acid environment needed for the action of pepsins. Pepsinogens are activated to pepsins by hydrochloric acid and by pepsin already present in the stomach. These enzymes begin the digestion of proteins, breaking them into smaller molecules. Pepsins have evolved to act most effectively at a very low pH between 1.5 and 3.5. Intrinsic factor, a protein, is necessary for the absorption of vitamin B12 from the ileum. Mucus prevents mechanical injury to the stomach wall by lubricating the contents. It also prevents chemical injury by acting as a barrier between the stomach wall and the corrosive gastric juice. Hydrochloric acid is present in potentially damaging concentrations and pepsins would digest the gastric tissues. Functions of the stomach. Number 1. Temporary storage allowing time for the digestive enzymes pepsins to act. Chemical digestion, pepsins break proteins into polypeptides. Mechanical breakdown. The three smooth muscle layers enable to the stomach to act as a churn. Gastric juice is added and the contents are liquefied to chyme. Gastric motility and secretions are increased by parasympathetic nerve stimulation. Limited absorption. Water, alcohol, and some lipid soluble drugs. Non-specific defense against microbes provided by hydrochloric acid and gastric juice. Vomiting may occur in response to ingestion of gastric irritants, for example, microbes or chemicals. Preparation of iron for absorption. The acid environment of the stomach. Solubilisis. Iron salts essential for iron absorption in the small intestine. Production and secretion of intrinsic factor needed for absorption of vitamin B12 in the terminal ileum. Regulation of the passage of gastric contents into the duodenum. When the chyme is sufficiently acidified and liquefied, the pylorus forces small jets of gastric contents through the pyloric sphincter into the duodenum. The sphincter is normally closed, preventing backflow of chyme into the stomach and secretion of the hormone gastrin. आज की क्लास में इतना ही। बचा हुआ ऐसा एक और वीडियो में प्रिपेयर करूंगा नेक्स्ट संडे, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का थर्ड पार्ट होगा। यदि आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे कोई भी वीडियो की नोटिस आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार, जय हिंद।